Alright guys, so ये भी stress somewhat similar in structure to pain. You're going to talk about the theories behind stress. What are the explanations behind stress? What are the causes behind stress? That's going to be the first section. Second section, you're going to talk about how to measure stress. जैसे पेन के अंदर हमने measures discuss किए थे, questionnaires वगैरह. Third section is how to prevent या reduce stress या manage stress, like just like how we did in pain. ठीक है. So stress. Let's talk about it. So see, basic understanding is needed for थोड़ा बहुत to understand what this chapter is going to be talking about. See, when you feel stress, right, your body basically increases your heartbeat, right? Your body basically sweats, and your basically body start to pump adrenaline, right? जिसम के अंदर एक surge of energy आता है, एकदम energize हो जाता है when you're stressed. So yeah, your body is responsible for that. ठीक है. So your body is responsible for pretty much everything it does, right? And you breathing, you digesting food, everything is happening on autopilot. ठीक है ना? You don't have to think about doing these things because your body is taking care of you. So uh, there is two functions, yeah, two categories of functions that your body carries out: the parasympathetic and sympathetic. Parasympathetic is the thing that you normally do without thinking, digesting food, breathing, whatever, right? Sympathetic is the things that you are going to do automatically when you're stressed. ठीक है. Yeah, when you're in danger, हो सकता है कि you know what, you are falling down एकदम से, so your body goes into sympathetic mode and heartbeat तेज जाएगी, your focus is going to increase, तुम्हारे reflexes तेज हो जाएंगे, right? So is that. So please remember that sympathetic is only activated in fight or flight response when you're stressed. ठीक है ना? So we're gonna largely talk about what your body does in the sympathetic state, right? So अब मैं sympathetic state का लफ्ज गलत बोल रहा हूँ. It's actually the sympathetic nervous system that take care of the things that you're in stress, and the parasympathetic nervous system take care of the things that you normally do with your body. So what? So basically, everything has to do with the sympathetic nervous system. इतनी ज़्यादा biology इसमें नहीं, बस remember कि what sympathetic nervous system is responsible about. ठीक है. So we want to find out, ठीक है ना, does basically stress, does it impact your body? As in, is stress harmful to you? Yeah, नहीं. So to explain the first theory in our syllabus for stress, we're going to talk about the gas model, general adaptation syndrome, the gas model. ठीक है. गैस मॉडल सीन क्या है कि भाई इसके पीछे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है ना? यू डोंट हैव टू नो दिस. तो द रैट्स, दे वर लैब रैट्स, राइट? चूहे थे. अब चूहों को डिफरेंट ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर दिया था, बट द आइडिया वाज के all of the rats will be exposed to stressful conditions. किसी को आप फिजिकली एग्जॉस्ट करवा के स्ट्रेस में डाल सकते हो, किसी को आप उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर डाल के स्ट्रेस में डाल सकते हो. Either way, you're going to stress out all the rats using different methods. ठीक है. And once you stress out the rats, होगा क्या? You're going to find out के what happens to their body, as in, is there any changes in their body. So understand this, ठीक है? When you're stressed, you are gonna release adrenaline. ठीक है? Simple. Adrenaline is released from something above your kidney. Kidney के ऊपर एक चीज लगी हुई जिसको हम कहते हैं adrenal gland. वो adrenaline produce करने के लिए responsible है. So basically, when you're stressed, your adrenal gland kicks in, it produces all the adrenaline you need. ठीक है? अच्छा. सेम थिंग हैपेंस इन द रैट्स. जब चूहों को हम स्ट्रेस में करना डालेंगे, उनका जो है एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट होगा और उनके अंदर एड्रेनलिन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा. ठीक है. लेकिन उनको क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर डालने से उनके जिस्म के अंदर कोई फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का मतलब है उनका एड्रेनलिन जो होगा ना, लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिवेट हो रहा होगा. सो या, वी वांट आवर एड्रेनलिन टू एक्टिवेट, बट डू वी वांट इट टू बी एक्टिव फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम? देखते हैं. सो होता क्या है,
These rats were put into stressful situation for a long amount of time. तो उनका बहुत adrenaline निकल जाता है. So when you study their bodies again, होता क्या है कि the rats compared to before, उनके जो थे पेट में छाले हो गए थे एंड उनके जो adrenal glands थे ना, ये वाले स्वेल हो गए थे, ये स्वेल हो चुके थे. तो बिकॉज इतना ज़्यादा एड्रेनलिन प्रोड्यूस हो रहा था इनके जिस्म के अंदर फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, it actually started to become very harmful for their health. So basically, the idea is, you know what, you don't want to remain in the fight or flight mode for a long amount of time. Yeah, you do want it, you do want to be here, but for a short amount of time. So best case scenario is you want sympathetic nervous system to be activated for a short amount of time. ज़्यादा अरसे तक चलेगा ना, is gonna take a toll on your body. So this is what the gas model is. कि भाई normally हम homeostasis के state के अंदर होते हैं जहाँ पे you know nothing's wrong with us, we're good, we're fine. But let's suppose something happens to disturb your peaceful state, disturb your homeostasis. So for example, it can be anything and it causes stress in you, right? So the first stage of stress is alarm stage, right? Alarm stage के अंदर your body is going to activate its sympathetic nervous system. So alarm stage के अंदर this is it. This is the point जहाँ पे adrenaline निकलना शुरू हो जाता है, right? And this is fine. You need this. In order to fix the cause of stress, you need this to happen to you. So alarm stage के अंदर your body activates itself and gets ready for stress. So basically gets ready for fight or flight. ठीक है. But what happens is the problem is going to be when it enters the stage 2. Alarm stage is good. Stage 2 is not. Stage 2 is the resistance stage. Resistance stage के अंदर क्या हो रहा होता है कि your body uh, wants to go back to its original state, right? Enough is enough. Your body is now tired from the alarm stage. It wants to go back to its original state, right? So basically, your body tries to go back to normal. Okay. When it does go back to normal, it's fine. The problem is when it does not go back to normal, but it wants to go back to normal. तो होगा क्या, इसके अंदर अमूमन क्या होता है कि रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर भी ना स्ट्रेस मौजूद होता है, गायब नहीं होता. So इसका मतलब है कि the stress is there, so the person will not calm down, right? The body wants to calm down, but the person will not calm down because the stress is still there. So your body is struggling, and the body wants to calm down, it's not calming down because the stress is still there. So that's the resistance phase, right? So basically, समझो कि your body wants to shut down, but it's not because stress वहाँ पे मौजूद है. This is dangerous क्योंकि it can lead to stage 3. Stage 2 के अंदर फिर भी you know is somewhat bad, somewhat good. It's not the critical point. But stage 2 का मतलब है कि you can easily go into stage 3, and stage 3 is the most dangerous point. Stage 3 के अंदर your body gives up. ठीक है. स्टेज 3 का अंदर योर बॉडी शट्स डाउन. ठीक है ना. तो समझो कि तुमने अपना इंजन, बॉडी का इंजन जो फुका दिया. ठीक है. सो you think of it that your body overheated and shut down. So basically you exhausted, your body couldn't take it anymore, so you collapse. तो worst case scenario के अंदर the person might have a heart attack, right? होता है ना कि स्ट्रेस के अंदर हार्ट अटैक हो गया. इसका मतलब है कि इसका बॉडी स्ट्रेस झेल नहीं पाया. स्ट्रेस झेल नहीं पाया का मतलब इसका बॉडी एग्जॉस्ट हो गया, स्टेज 3 के अंदर चला गया. कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग फेंट कर जाते हैं, राइट? सो दैट्स द एग्जॉस्शन स्टेज. सो द आइडिया इज कि लॉन्ग टर्म exposure to stress is harmful for your body because you can go into the exhaustion stage and that's dangerous, right? So that's explained by the gas model. So पहले alarm stage के अंदर बॉडी होता है, फिर resistance के अंदर जाता है, फिर exhaustion stage के अंदर जाता है. All you have to remember is alarm के अंदर क्या होता है, resistance के अंदर क्या होता है, exhaustion के अंदर क्या होता है. ठीक है. And that's it. So yeah, I have a question. What is that? But won't the body release non-adrenaline along with adrenaline to make you feel relaxed and calm? Well, it does. It will. So Zara has made a very क्या कहते हैं important point कि भाई जब adrenaline निकल रहा होता है right हमारा, तो साथ में एक और क्या कहते हैं hormone होता है which is known as non-adrenaline. It's like the opposite of adrenaline, right?
So won't it get released to counterbalance the adrenaline? Well, yes, it will. ठीक है, yes it will, but non-adrenaline is released, ठीक है ना, to counter the adrenaline. But what if the stress is itna ज़्यादा that we don't want the counter for adrenaline? We want adrenaline to be there. So either way, भले non-adrenaline निकल रहा हो, ठीक है ना, the adrenaline is still gonna be active. तो adrenaline gland जो है is gonna be active. So even though non-adrenaline is gonna be there, there's somewhat gonna impact of adrenaline on your body. So basically, your body is working either way. It's not gonna rest when it's in exposed to stress. So because भले adrenaline निकल रहा हो, भले non-adrenaline निकल रहा होगा, your body is gonna work. भले जो भी हो, right? And that is why, because of continuous working, your body is gonna collapse, and then you're gonna have mental, not mental, medical problems with you. होता है ना कि कभी कभार कुछ लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले पाए. Classic example, exhaustion. So yeah, it is there कि non adrenaline निकलता भी होगा, but the point is your body is still active, so that's not good. So yeah, you're supposed to remember the 3 stages, and yeah, so basically, uh, this is very good for people. For example, होते हैं clinics में आते हैं, भाई मुझे stress हो रहा है. So you can use this gas model to educate them कि भाई how does stress impact their body. So it's a very good educational tool. So it is applicable to educate people about this stress, right? All right. Is it deterministic? Yeah, because you cannot control your adrenaline release. It's automatic, right? So you cannot control whether तुम्हारे जिस्म में adrenaline निकले ना निकले, non-adrenaline निकले ना निकले. Everything in your body happens automatically, so it's going to be deterministic. You're not learning something. Hey, I have a question. What is that? Yes, different लोग के अंदर different चीज़ आती हैं. So nervous breakdown could be a sign of exhaustion. So क्या कहते हैं? हाँ ज़ारा, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो? All right. Yeah. So yeah, you don't control your hormones consciously, so it's deterministic. You're not changing the person's क्या कहते हैं situation, बल्कि नहीं एक मिनट. You're not teaching the person something new according to this theory. This happens completely on a biological level, and it is automatic. Everyone has flight or flight response in them, so it is going to be nature based, not nurture. Acha. Is it individual situation? Well, it's both. किसी बंदे का जो है अलार्म स्टेज बहुत लंबा होता है, so they might not get exhausted quickly, and किसी बंदे का जो अलार्म स्टेज बहुत छोटा सा होता है, टॉलरेंस कम होती है. So हर बंदे के हिसाब से हर बंदे का जो स्टेज का ड्यूरेशन है is going to be different to their own individual physiology. So इस individual के हर बंदे का जो है वो टाइम अलग होता है, एग्जॉस्शन का, रेजिस्टेंस का, अलार्म का. सिचुएशन किस तरह होगा? सिचुएशन इसके अगर तुम बंदे को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एक्सपोज करोगे, सो दे आर गोना गो इनटू एग्जॉस्शन स्टेज, बट इफ यू डोंट एक्सपोज देम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, दे आर नॉट गोना गो टू एग्जॉस्शन स्टेज. सो इट इज सिचुएशनल इन दैट रिगार्ड. क्या कहते हैं उसके अलावा, is this generalizable? Because yes, it is. It is somewhat applicable to every person on earth. It is talking about biology after, and biology is same in every individual, but there are slight differences, but the principle is going to be the same. Acha, individual situation ho gaya. Is it reductionist? Yes, because it explains stress completely in the physiological perspective, ignores all the available perspective there is. So it is reductionist in that regard. So my CI can, they're going to ask you what the gas model is. So you just talk about the 3 phases and give brief definition about the 3 phases. अगर 4 mark का सवाल होगा, 4 mark का सवाल नहीं है, you just name the stages and you move on. You don't need to explain the stages. So that's gas model. If you talk about the extent and severity of the situation, would it be listed as individual variable? If you talk about the extent of the situation, if you talk about the extent of the same situation felt differently by different individuals, then individual aega. But if you talk about people having different stress because of
different situations they're facing, फिर situation आएगा. Does that make sense? All right. हाँ, तो second cause of stress. ठीक है, so this is अब ये second हम research की तरफ जा रहे हैं. So this is a famous study done by Chandola, right? It's a very useful study. Uh, so basically, we know that work stress causes heart attack. We know that, right? Okay, there are many people who have high stressful jobs, like bankers, right? जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, they have heart attacks and they die क्योंकि उनकी जॉब इतनी स्ट्रेसफुल होती है. तो we know that high stress job causes heart attacks. बट वी ऑल्सो नो कि हर किसी को हाई स्ट्रेस जॉब के अंदर हार्ट अटैक नहीं होता. किसी किसी को हाई स्ट्रेस जॉब के अंदर हार्ट अटैक होता है और किसी किसी को हाई स्ट्रेस जॉब के अंदर हार्ट अटैक नहीं होता. सो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाई. व्हाट्स द डिफरेंस मेकर? सो Chandola, what he does is he wants to find out the biological and behavioral factors that makes people have heart attacks when they have difficult jobs, and biological and behavioral factors that prevents people from having heart attacks when they have difficult job. So yes, so he wants to find out what's the difference maker in यहाँ पे. So for this study, he takes around 10,000 plus people, very huge sample, right? Male female का ratio मैंने लिख दिया. Male 7,000, almost females 10,000 or 3,000 almost. Unequal ratio but huge in numbers is going to be generalizable according to numbers. Age range देख लो 35 से 55 है, so it encompasses a large age group of people. Yeah. So by the way, all of these people are employees because you're gonna find out work stress. So all of them are doing jobs. It's a very longitudinal study because it ended in 2004. Okay? But it started from 1985. So like I don't know कितने साल हुए होंगे, 19 I guess, 19 what, I don't know. But it 9 साल शायद. It went for a long amount of time. So longitudinal study with the validity बहुत high होगी. So basically he wants to find out कि भाई work stress कितना है और ये factors क्या क्या आते हैं लोगों के अंदर and what causes heart attack. So find work stress, obviously वो एक questionnaire देगा which is going to measure the work stress. That's the job strain questionnaire, right? How do you find behavioral and biological factors? You find this by conducting a clinical exam. So yeah, so work stress is gonna be found out by a questionnaire, and ये बाकी दो चीजें होंगी ना, that's gonna be found out by a medical exam. ठीक है? And then you're gonna find out two of them and link that to heart attack. So he 3 साल के अंदर तो पहले लोग जमा करने में लगा देता है. So experiment असल में 1989 के अंदर शुरू हुआ था. If you think about this, 89 के अंदर, you guess 1989, right? You इतना ज़्यादा कंप्यूटर सबके पास नहीं था, तो he sends questionnaire through posts. कौन सा क्वेश्चनर भेजता है? जॉब स्ट्रेन क्वेश्चनर. जॉब स्ट्रेन क्वेश्चनर क्या मेजर करेगा? लोग का वर्क स्ट्रेस. सही है. So that's the 1 year timeline. एक साल बाद लोग को दोबारा क्वेश्चनर भेजता है, but he also collects people's clinical exam information. The clinical exam will tell you about these things. So work stress through a postal questionnaire, and a clinical exam will find out these two things. So he does this again and again, again and again. Okay. By 2004, right? 6,484 people complete the entire procedure. ठीक है, 2004 के अंदर. So 2004 के अंदर, even though he started with this amount of people, he's down to this many people now. कुछ लोग छोड़ गए होंगे, कुछ लोग मर गए होंगे, we don't know, but these things tend to happen. So you're left with 6,484 people at the end of the study. But it is still a huge number, even though पहले से बहुत कम हो गया, but still a huge number. So thousands के people के बारे में बात करो तो is this generalizable in that regard? So this study remained generalizable till the end. All right, what did he find? Cholo. So he found that high work stress does cause heart attack. ठीक है?
But he also found these factors that can either prevent a heart attack or that can increase the chances of you having a heart attack. As in, if you have high work stress, but if you drink, smoke, have poor diet and poor activity, you can have heart attack. If you have high work stress, but you don't drink, you don't smoke, diet is good, activity is good, you're not going to have heart attacks. इसी तरह बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसने फाइंड आउट किए थे. Which apparently weight circumference also plays a role apparently. Certain things also plays a role. The blood pressure होगा, serum triglycerides होगा, जो भी है. If you take hypertensive medications, blood pressure कम करने के लिए, gonna increase your chance of heart attack, right? If you have a fast heartbeat naturally, chance of heart attack. अगर morning के अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर cortisol ज़्यादा होगा, chance of heart attack. Younger people who have high work stress will have heart attack. Older people who have high work stress will not have heart attack. क्यों होता है? जवान लोग होते हैं ना, पहली दफा नौकरी के अंदर गए होंगे, एकदम से उनको high work stress दे दिया, they may not be used to it, so they might have heart attack. Older people are now used to these things, so they can handle high work stress and they can survive it, so they won't have heart attacks. But so these are the biological and behavioral factors when combined with high work stress may cause you to have heart attack, या may not cause you to have heart attack. But so these were the results. You don't have to remember all of them. थोड़ा बहुत यहाँ से याद कर लेना, थोड़ा बहुत यहाँ से याद कर लेना, ठीक है? तो yeah, so that's the research, right? So sometimes your biological and behavioral factors also cause heart attacks. So talking about the validity of this study, it's a very very study क्योंकि longitudinal था, ठीक है ना, लंबे टाइम तक गया था. But some things were not controlled, as in हो सकता है कि you know what, you did not control what happened to these people in this amount of time. किसी के लिए किसी की डिवोर्स हो चुकी होगी, किसी की घर में डेथ हो गई होगी. So these can act as extraneous variables. Also, people filled out the result on a questionnaire, so questionnaires can have demand characteristics, so that's the problem. But was the study generalizable? Yes. Was the study is culture bias? Well, हो सकता है yes, क्योंकि this study was done in UK, तो UK के हिसाब से ये मसला आता है. हो सकता है पाकिस्तानी पॉपुलेशन के हिसाब से हम करेंगे तो क्या पता कि बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ और हैं. So it could be culture bias. Is the study applicable? Yes. Now companies, when they look at Chandola study, they can now make uh, क्या कहते हैं, some policy to address these. For example, they can make sure कि भाई कंपनी के अंदर जो young लोग होंगे उनको थोड़ा कम workload दें, experience लोग को ज़्यादा workload दें. You know what? They can make sure कि हर बंदे के कंपनी के अंदर जिम के पास access हो, so that everyone has a healthy activity. They can make sure the cafeteria has healthy food, right? So they can take care of some of these factors. Is this individual situation? Well, these factors are individual, right? And these factors are also individual. So whatever you do and however your biology is, that's going to impact your stress. So yeah, the situation is not going to be not changing for everybody. The situation is going to be remaining same, but what's different is what are you doing and how your biology is. So that's completely individual in that regard. So Chandola की study के अंदर this is the summary of the study. CHD का मतलब है chronic heart disease, हार्ट, ठीक है ना, हार्ट अटैक वगैरह. So as you can see, इन्होंने इतना ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में नहीं लिखा, कुछ रिजल्ट हाईलाइट किया, ठीक है ना. So that's what you're supposed to remember. All right. So is Chandola study clear? Right. So अब हमारे पास होगा, yes, apparently in stress के chapter के अंदर you're gonna have 4 causes in the first section. पहले section में 4 researches हैं. But the good thing is they're interconnected to the second section. So अगर तुमने पहली दफ़ा थ्योरी पढ़ ली होगी ना, तो दूसरी दफ़ा उसको मेजर्स के अंदर पढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो दो थ्योरीज पढ़ेंगे वो मेजर्स के अंदर रिपीट होंगे. So the first is the by Home and Rahi, the life events basically.
ignore the slide a bit, and the concept is that, you know what, if you have negative things happen to you, yeah, if you have negative life events happen to you, right, you're gonna have high amount of stress. Okay, common sense. So अब हर किसी बंदे के साथ एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे, दैट्स गोना डिफर, राइट. कोई इंसान जेल जा सकता है, किसी इंसान के घर में डिवोर्स हो सकती है, किसी के इंसान में कोई डेथ हो सकती है, राइट. एनी वन कैन, यू नो व्हाट, हैव डिफरेंट थिंग्स हैपन टू देम. बारह. सो द आइडिया इज, जितना ज़्यादा खतरनाक चीज़ तुम्हें होगी ना, उतने ज़्यादा चांसेस है तुम्हारी स्ट्रेस ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ खराब होगी. सही है. दैट्स द लॉजिक यहाँ पे. So more negative life events happening to you, the more stressful you'll feel, and the more stressful you'll feel, the more ill you're gonna get. Chances are. So Holmes and Rahi were finding, does this logic make sense? ठीक है. So अभी they're testing out the theory part. ठीक है. Does this make sense को question कर रहे हैं. ठीक है ना. Abhi they're not constructing a questionnaire, because these people are going to be the same people who are going to construct a questionnaire as well. So even though abhi maine questionnaire ki tasveer lagai slide pe, but they're going to find out whether this theory makes sense or not abhi. So to find out whether this theory makes sense, कि जितना ज़्यादा तुम negative life events महसूस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा stress बढ़ेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा health बिगड़ेगा. To make sense of this theory, they're going to conduct an experiment. Experiment क्या होगा? They are going to collect, they are going to go to 394 people. American, by the way, 1967 के अंदर American लोग को approach किया था. And when they approached those 394 people, 394 people को 43 events की list दी थी, right? Death, divorce, marital separation, Christmas तक. Sorry, minor violation of the law तक. These were random 43 events given to these 394 people. So every person got 43 events. अब करने क्या होता था 394 people को? These 394 people were supposed to give scores to each event. So yeah, let's suppose I'm dealing with three of you, Halima, Shahryar, and Zara, right? Halima, Shahryar, and Zara are the participants in my study, and I give you these 12 events. ठीक है. Shahryar को 12 दूंगा, Halima को 12 दूंगा, and Zara को 12 दूंगा, right? And बेसिकली आई टेल यू गाइस कि भाई हर इवेंट को ना आउट ऑफ 100 स्कोर दे दी जाओ, कितना स्ट्रेसफुल होगा, राइट. तो डेथ ऑफ अ स्पाउस आउट ऑफ 100 तुम्हें कितना लगता है स्ट्रेसफुल होगा, मार्क कर दो. डिवोर्स आउट ऑफ 100 कितना स्ट्रेसफुल होगा, मार्क कर दो, राइट. जेल जाना आउट ऑफ 100 कितना स्ट्रेसफुल होगा, मार्क कर दो. नौकरी से उड़ जाना, बीइंग फायर्ड फ्रॉम वर्क, आउट ऑफ 100 कितना स्ट्रेसफुल होगा, मार्क कर देना, राइट. सो दिस इज व्हाट द 394 पीपल डिड. दे गेव the rating of out of 100 for every events कि कितना stressful होगा नहीं होगा. So जो rating देते हैं ना out of 100, these are known as LCUs, right? Life changing units. मेरे पास सवाल है, okay? Apply to oneself. ठीक है. So they were supposed to assign LCUs out of 100 on every single event. ठीक है. So जब 394 लोगों ने 43 इवेंट्स पे अपने अपने LCUs दिए होंगे, so this is the average you found. On average हर किसी ने डेथ ऑफ अ स्पाउस पे 100 दिया होता. On average हर किसी ने minor violation of the law पे 11 दिया होता, right? So basically assign करने के बाद the researchers arrange them in ranking order as well. So these were the averages given by people. So yeah, you can see that for yourself. You might agree with them, you might not agree with them, but this is 1967 America we're talking about. So Bharat. So after people gave them the LCU, Holmes and Rahi made this chart depending on the average that the people assigned them with. So yeah. उसके बाद Holmes and Rahi give one simple क्या कहते हैं statement. So let's suppose it's not necessary for you to have different events happening to you. एक होता है ना quantity of, तुम्हारे साथ 3 खतरनाक हादसे हो गए साल में. So Holmes and Rahi सर के लाजमी कि तुम्हारे ऊपर नंबर ऑफ इवेंट ज्यादा होंगे तो तुम्हें स्ट्रेस ज्यादा महसूस होगा. हो सकता है एक इवेंट भी भारी हो सकता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट हो गई और मैरिज रिकंसिलिएशन हो गया, इन दोनों का स्कोर 90 है। एक डेथ ऑफ स्पाउस इन दोनों पे भारी है कि ये तो है मिला के 90, डेथ ऑफ स्पाउस 100 आ गया, तो एक इवेंट दोनों पे भारी हो सकता है। तो लाजमी नहीं कि आपके साथ बहुत सारे इवेंट्स हो। होम्स एंड राही कहते हैं कि जितने भारी इवेंट तुम्हारे पास साथ होंगे ना, उस हिसाब से हो सकता है कि तुम्हारे चांसेस है कि तो आप हाईली स्ट्रेसफुल हो जाए, और उसके हिसाब से हो सकता है कि आप अगले साल बीमार हो सकते हैं या आने वाले दिनों में बीमार हो सकते हैं। तो जितने हैवी इवेंट्स होंगे ना, उतने चांसेस आप स्ट्रेस हो गए, उतने चांसेस आप बीमार हो गए आगे जाके। तो कितने हैवी इवेंट्स होना खतरनाक बात है। होम्स एंड राही कहते हैं अगर आपके एक साल के अंदर हैवी इवेंट्स का टोटल स्कोर 300 क्रॉस कर जाता है ना, फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ पास 100, तुम्हें 200 और चाहिए, 300 क्रॉस कर जाओगे। जब 300 क्रॉस कर जाते हैं ना, होम्स एंड राही कहते हैं कि खतरनाक टाइम आ गया। 300 का स्कोर इज वेरी डेंजरस। अगर तुमने 300 स्कोर कर लिया ना, चांसेस आर यू आर गोना गेट इल। 300 से कम है चलता है, 300 इज द कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। एंड होम्स एंड राही सेड के जो तुम्हारे जो बीमारी आएगी ना, वो 2 साल के अंदर फिर सामने आएगी, ठीक है। सो 300 क्रॉस करने के बाद 2 साल के अंदर आपको कोई ना कोई मेजर बीमारी होने वाली है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट होम्स एंड राही सेड। बेसिकली साल के अंदर जितने हैवी नेगेटिव इवेंट्स होंगे, चांसेस है कि आगे जाके बीमार हो गए। हैवी नेगेटिव इवेंट्स का स्कोर क्या कट ऑफ दिया ना, 300। किस तरह मालूम किया? 394 पीपल बुलाए इन्होंने एंड दे गिव द 43 इवेंट्स, एंड हर किसी को उस 43 इवेंट्स को 100 LCUs स्कोर करने थे, ठीक है। ये SSRS का नाम अभी मत लिखना, ठीक है ना, बस इतना याद कर लो। ठीक है। सो बाय टॉकिंग उसकी इवैल्यूएशन करेंगे तो इज दिस इंडिविजुअल सिचुएशनल इज बोथ। हर बंदा अपने हिसाब से यहाँ पर अलग रेटिंग देगा, तो इज इंडिविजुअल। होम्स एंड राही के हिसाब से जितने आपको भारी भारी सिचुएशन होंगे उतना आप स्ट्रेसफुल जाओगे, तो दैट्स सिचुएशनल, ठीक है ना। सो इज इंडिविजुअल सिचुएशनल बोथ। इज इट क्या कहते हैं, नेचर नर्चर, आई डोंट थिंक यहाँ पे अप्लाई होगा। या was this generalizable? Yet 394 people, large sample, but this was culture bias क्योंकि this was done in America. अमेरिका के हिसाब से ये रेटिंग आ रही है। हमारे मुल्क में करें तो क्या पता कि डेथ ऑफ स्पाउस की रेटिंग कुछ और हो जाएगी, मैरिज की रेटिंग कुछ और हो जाएगी। Is culture bias in that regard? Self report भी था, so people could be biased. Is this applicable? Yes, it could be used to find out people who are gonna be ill in the future. So we can ask them कि भाई आपको इस साल के अंदर क्या क्या हुआ, and if we find out the LCU, हो सकता है we can arrange future medical appointment with them because we know that they're gonna get ill in the future. Yeah. So I guess that's it for Holmes and Rahi. इसमें कोई confusion? All right. So last we have personality. ठीक है ना, ये भी दूसरे सेक्शन के अंदर रिपीट होगा, फ्राइडमैन रोजमैन। सो बेसिकली फ्राइड एंड रोजमैन कहते हैं कि भाई पर्सनैलिटी इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, मेक सेंस। सो बेसिकली फ्राइडमैन रोजमैन सेज कि स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय व्हाटएवर पर्सनैलिटी यू हैव। सो फ्राइडमैन रोजमैन आइडेंटिफाइड टू मेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए टाइप बी के बिहेवियर पैटर्न्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। You might have seen them in your work life, yeah, school life. Type A are the people who are gonna walk fast, talk fast, do things fast, get stressed about deadlines, right? Want things, everything perfectly, right? Want things under their control. Type B are the people who are chill, who don't care, right? Who don't care about marks, who don't care about submissions, who don't care about being neat and tidy, who don't care about things being controlled, right? So you have these type of people. Type X are the people जो दोनों जगह नहीं आ सकते. We're not concerned about type X. We're concerned about type A and type B. So yeah, judging by that, type A is going to be more stressful than type B, right? So to find this theory out, okay, whether type A are actually going to be stressed out zyada than type B, they're gonna conduct an experiment. So basically, after knowing कि type A के behavior क्या होते हैं, after knowing type B के behavior क्या होते हैं, they're gonna conduct an experiment. They're gonna conduct a study for 9 years जहाँ पे they're gonna consider 3,000 men. So they're gonna keep score of 3,000 men for 9 years. ठीक है, 9 years तक they're gonna follow them.
दे नो कि 3000 मैन के अंदर से कितने टाइप बी हैं, दे नो कि 3000 मैन के अंदर से कितने टाइप ए हैं। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट इन्होंने डिवीजन किया होता, क्या पता 1500 टाइप हैं, क्या पता 1500 टाइप बी हो, वी डोंट नो। भारत, so 9 years they follow 3000 men of both personalities, type A type B combined। 9 years गुजरने के बाद पता लगता है 3000 आदमी से ना 257 लोग मर चुके हैं। अच्छा ठीक है, किस तरह मरे? हार्ट अटैक से मरे। अब हमें ये पता लगाना है कि यार 257 मैन जो मरे हैं हार्ट अटैक से, ज़्यादा इसमें से कौन से मरे, टाइप ए के टाइप बी से? तो व्हेन वी गॉट द ब्रेकडाउन पता चला कि 180 लोग टाइप ए के हार्ट अटैक से ज़्यादा टाइप ए के मरे, लेकिन टाइप बी के सिर्फ 77 लोग हार्ट अटैक से मरे। सो वी कैन कंक्लूड कि यू नो व्हाट, टाइप ए वाले लोग को ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट हार्ट डिजीज एंड डाई बिकॉज दे हैव मोर चांसेस ऑफ स्ट्रेस। टाइप बी वाले को कम चांसेस हैं टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक बिकॉज they are less likely to get stress. So that's the reason. So that's how the proof that type A is the stressful personality and type B is not the stressful personality. Is logic में कोई मसला? All right, so basically you're supposed to remember that type A and type B के behavior patterns क्या होंगे because this is gonna come in handy later on. But this is the explanation that type A and type B, which one is more likely to die with stress. So is this study valid? Yes, longitudinal था 9 साल तक study की थी, so it is valid in that regard. Was it generalizable? Yes, but only to men because women were not included in the study. Is it culture bias? हो सकता है जिस कल्चर में उन्होंने स्टडी किया होगा उस हिसाब से कल्चरल स्ट्रेसर्स आए होंगे। हमारे मुल्क के अंदर टाइप ए टाइप बी के ऊपर स्टडी करेंगे, हो सकता है कि हमारे मुल्क के हिसाब से टाइप ए एंड टाइप बी लाजमी तो आएंगे लेकिन स्ट्रेसर्स उनके लिए अलग होंगे। Is this study reductionist? Yes. It only focused on personalities. They ignored the biological aspect, ignored everything else. Is this study applicable? Yes. So is study is applicable in that regard के by understanding कि type A and type B के personality behaviors क्या होंगे, we can actually construct interviews. We know by looking at this we can exactly construct interview questions कि भाई हमें type B से क्या पूछना चाहिए, हमें type A से क्या पूछना चाहिए, to identify them. So basically this gives you a blueprint to formulate questions on कि भाई type A and type B से अगर मैं ये सवाल पूछूंगी तो अगर ये जवाब आता है तो type A होगा, type B होगा. So for example, क्या आप काम के अंदर डेडलाइन के बारे में फिक्र करते हैं कि नहीं करते? If they say yes, type A. If they say no, type B. So you can easily use this to formulate questions. Is an individual situation is completely individual because personality is individual factor. So yeah, this is the research. Type in type B wala. So that's it. Are there any questions for the entire section we have done in stress? जो पहला section था. Or is everything clear? All right, guys. So we'll resume on Monday with the second section. Okay. So yeah, if you have any questions, push lena. So for now, I'm signing out and मैं slides भेज दूंगा.